Human Excretory System, a competency-based video lesson. The objectives of the lesson are to introduce the students to the human excretory system through diagrams, by telling the name of the parts of the excretory system and by explaining the function of each part. And the lesson is bilingual, that is, it is in English as well as Hindi, and most of the narration will be in English to enhance the English language listening ability of the students so that they're able to develop an interest in learning science through English medium. So we will study about the excretory system by using its images. हम excretory system की study करेंगे image को देखते हुए, excretory system के images को देखते हुए. Human excretory system consists of different parts such as kidney, ureter, urinary bladder, urethra, and urinary opening. I'm repeating the parts and you should repeat along with me. Human excretory system consists of kidneys, ureters, urinary bladder, urethra, and urinary opening. You can also find the same image in NCERT Science Textbook, Class 7, page 126 and 127. The kidneys are located on both each side of the spine and at the level of liver. If you look at the picture of the spinal cord here, this is the spine, and each kidney is located on either side of the spine. A 3D model of human excretory system looks somewhat like this, where we get to see a pair of kidneys, a pair of ureter, urinary bladder, urethra, urinary opening, renal artery, and renal vein. While you listen to the narration, you should also look at the movement of the cursor. The other parts of the human excretory system are pelvis, medulla, and cortex. But where are these parts present? These parts are present within the kidneys. So if we look at the image in slide number 7, we get to see the parts of the human excretory system as a pair of kidneys, a pair of ureter, urinary bladder, urethra, renal artery, renal vein, and when we move inside the kidney, we find a part called pelvis, another part called medulla, and another part called kidney. A zoom in image of the kidney is given on the other side in slide number 7, where we have a closer look at the upper part of the kidney, which is called as cortex, pyramid-like structures called medulla, and this pyramid-like structures open into an area which is called pelvis. So the inside view of kidney shows us cortex, pyramidal shaped medulla, then nephrons present in cortex and medulla. Most of the nephrons are present in the cortex region. They open into the medulla, their lower parts open into the medulla. Then we have pelvis, and we can see the outer part of the excretory system, which includes renal artery, renal vein, and ureter. In the next slides, we will be focusing on nephrons. Working of human excretory system. So we have come to know about the parts of the human excretory system.
Now let us know about the function of each part. I'm going to read out the text shown in the slide. And you will pay attention to what I read, because some of the questions that you will be getting at the end of the presentation will have answer in the text given here. So what are the function of the kidneys? We have two kidneys. This pair of purplish brown organs is located below the ribs toward the middle of the back. हमारे किडनी का क्या कलर है? पर्पलिश ब्राउन कलर है. कहाँ प्रेजेंट है? बिलो द रिब्स. इनका मेन फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी. हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट और ड्रग्स को रिमूव करना इनका काम है. और नेक्स्ट फंक्शन क्या है? बैलेंस द बॉडीज फ्लूइड्स. देन रिलीज हॉर्मोन्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड cells. We have two ureters. These narrow tubes carry urine from the kidneys to the bladder. Muscles in the ureter walls continually tighten and relax, forcing urine downward, away from the kidneys. If urine backs up or is allowed to stand still, a kidney infection can develop. About every 10 to 15 seconds, small amounts of urine are emptied into the bladder from the ureters. Ureter का काम क्या है? ये पतले ट्यूब्स होते हैं जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक ले जाते हैं. इनके वॉल मसल्स के बने होते हैं और ये हमेशा रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं. इनकी खासियत ये है कि ये हर 10 से 15 सेकेंड में थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिन हमारे ब्लैडर तक पहुंचाते रहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर यूरिन हमारे किडनी के अंदर जमा हुआ रह जाएगा तो किडनी इन्फेक्शन होने का डर रहता है. नाउ ब्लैडर, विच वी कॉल एज यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज अ ट्रायंगल शेप्ड हॉलो ऑर्गन. ये जो हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये ट्रायंगल शेप का है और हॉलो है. हॉलो मतलब अंदर खाली होता है. दिस ट्रायंगल शेप्ड हॉलो ऑर्गन इज लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन. इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स दैट आर अटैच्ड टू अदर ऑर्गन्स and the pelvic bones. The bladder's walls relax and expand to store urine and contract and flatten to empty urine through the urethra. ये जो urinary bladder है, इनका क्या काम है? ये यूरिन को स्टोर करके रखते हैं. यूरेटर्स किडनी से यूरिन लेकर के यूरिनरी ब्लैडर को देते हैं और यूरिनरी ब्लैडर जो एक ट्रायंगल शेप्ड ऑर्गन है, इसमें यूरिन कुछ वक्त के लिए स्टोर होकर के रहता है. ठीक है. तो द ब्लैडर्स वॉल्स रिलैक्स एंड एक्सपैंड टू स्टोर यूरिन. जब यूरिन ब्लैडर में स्टोर होकर के रहता है तब यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है वो एक्सपैंड करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन टू एम्प्टी यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा. और जब यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है तब यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. The typical healthy adult bladder can store up to 2 cups of urine for 2 to 5 hours. Then next part क्या है हमारे excretory system का? 2 sphincter muscles. These circular muscles help keep urine from leaking by closing tightly like a rubber band around the opening of the urinary bladder. हमारे urinary bladder का एक urinary ओपनिंग है. उस ओपनिंग को ये स्फिंक्टर मसल्स बंद करके रखते हैं ताकि यूरिन अपने आप यूरिनरी ब्लैडर से बाहर ना निकले. यूरेथ्रा. दिस ट्यूब अलाउज यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी. द ब्रेन सिग्नल्स द ब्लैडर मसल्स टू टाइटन which squeezes urine out of the bladder. At the same time, the brain signals the sphincter muscles to relax to let urine exit the bladder through the urethra. When all the signals occur in the correct order, normal urination occurs. तो ये जो urination का process है,
ये कंट्रोल हो रहा है हमारे ब्रेन से। जब यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना होता है तो ब्रेन से सिग्नल आता है यूरिनरी ब्लैडर में, तब यूरिन उसमें स्टोर होकर रहता है। लेकिन जब यूरिन को पास आउट करना होता है तब भी ब्रेन से सिग्नल आता है, स्फिंक्टर मसल्स थोड़े रिलैक्स होते हैं और यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अगर स्फिंक्टर मसल्स और ब्रेन ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, दोनों के बीच में सिग्नल का आदान प्रदान सही होता है, तो नॉर्मल यूरिनेशन होता है। अदरवाइज कभी कभी हमारे बगैर पता चले ही बॉडी से यूरिन बाहर निकल जाता है। तो in this video lesson, we come to know about the different parts of human excretory system by studying the diagrams, okay, and by learning about various functions that they perform. Now, here are some of the learning reinforcement activity for you for this video lesson part 1. The first activity is you have to write down parts of human excretory system that have been discussed until now in this video lesson. Then there is a question. Could you develop a way to memorize all the parts? कि क्या आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे कि आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स को बड़े आसानी से याद कर सके? अगर आपके पास कोई ऐसा मेमोराइजेशन टेक्निक है तो आप अपने नोट कॉपी में लिखेंगे. So you have two learning reinforcement activities. First, you have to write down parts of human excretory system that have been discussed until now. And second, could you develop a way to memorize all the parts? If yes, then write the memorization technique in your note copy. Thank you, and we will come with the video lesson part 2 for the same topic.